हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 1 है ऑनलाइन बेकिंग बूट कैंप का। हम सारे आ गए हैं, यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही है। ब्रेकफास्ट यहाँ है और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद क्लास की तैयारी देख लूँगी क्या क्या चीज़ें सेटअप की गई हैं। सारे यहाँ पे आ गए हैं और उधर भी दूसरे स्टूडियो में सारी तैयारी चल रही है क्लास की। तो शुरू करते हैं आज का दिन। वेलकम टू संगीता's Cooking Mantras online baking boot camp in which I'm going to share all my little tips and tricks that will help you become a master baker. ऑनलाइन बेकिंग बूट कैंप में आप स्पंजेस ही नहीं बल्कि मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखते हो। शुगर फ्लावर्स, सेमी फॉन्डेंट केक्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग यू लर्न। बट दीज आर लाइव सेशन दैट आर ब्रीदर्स, 1-to-1 लाइव सेशंस एंड 1-to-1 Q&A के लिए। Of them. So all of you can make it. These are my tried and tested recipes. Don't worry, just follow it to the T. Okay. Now in the chocolate sponge. थोड़ा सा बैटर को डार्क रखना, जो आपको कलर चाहिए उससे ज्यादा, because after baking there is a little color loss. देखो. Complete no to overmixing. Do not overmix your egg-free sponges. If you overmix your egg-free sponges, then you are going to have a dense sponge, a chewy sponge, sponge that doesn't rise well, sponge that doesn't get baked well. All the problems lie when you overmix your batter because the gluten has started to bubble or froth. And keep stirring until the sugar in it completely dissolves, okay? देखो एकदम सॉफ्ट स्पंज आज बेक हो गई है। वनीला स्पंज, पाइनएप्पल स्पंज। तो डे 1 बूट कैम्प का फिनिश हो गया है आज। स्पंजेस बन गए हैं। कल हम फ्रॉस्टिंग सिखाने वाले हैं, ऑल अबाउट कलर्स एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, बहुत जोर भूख लगी है। उसके बाद कल की क्लास की तैयारी होगी। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। तो आज का दिन फिनिश हुआ कुछ ऑर्डर्स के साथ और रील शूट के साथ। तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी स्टूडियो क्योंकि कुछ काम पेंडिंग था और क्लास के पहले मुझे वो सारी चीज़ें फिनिश करनी थी। गुड मॉर्निंग, हाउ इज एवरीबडी डूइंग टुडे? सो वेलकम टू डे 2 ऑफ ऑनलाइन बेकिंग बूट कैम्प बाय संगीता's Cooking Mantra. You can see that these lines are there. This is because of the rack. The sponges are so soft that you will find these lines. Don't bother too much about it because you anyway is going to tot it and then start filling and frosting. Won't move. So yes, the venue has been finalized. It's Lutyens Delhi in Chhatarpur, and it's very close to the metro station, so that it's very convenient for you, for all of you to come in. All those who can, do come. I know not everybody can, but do come because my students tell me, all those who travel from Hyderabad, Kolkata and all these places, they tell me, ma'am, मीट में आने के बाद हमारे ऑर्डर्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं, एंड यू विल हियर इट आउट राइट फ्रॉम देम व्हेन यू कम टू द मीट. If the sponge is made beautifully, you don't have to poke anything, you don't have to keep pushing. It will absorb. I've shown you soaking from the front and soaking from the back as well. For us to staying up so late, do more classes please. Sure Deepti, we'll do some free classes also for you, don't worry. Everything was well explained. Thank you so much, Pooja. I'm glad that you are liking the classes and you feel that it's worth taking the class, and I hope all of you, I wish all of you all the best. Start with the sponges. See,
You have to start with the sponges. Master the sponges first. Don't just jump into making the entire batch. Bake your sponges beautifully and master that first, and then start filling and frosting. Tomorrow I'm going to talk about fondant. Tomorrow I'm going to talk about gum paste. I'm going to talk about figurines. I'm going to talk about sugar flowers. So tomorrow is going to be a new day and a new masterclass. So do come in and join. Until then, have a nice day. Have a nice time learning, and thank you for taking Sangeeta's Cooking Mantra as your baking mentor. Thank you. Thanks for watching, everyone. Do like, share, and subscribe to our channel. Thank you again.